तो एक पेशेंट था, so my Hindi is not so good. That's why Danvesh is here to talk about basilar artery occlusion. So this is a fourth patient, and this is the importance of really getting this down. When there's an occlusion, one of the biggest lessons that we learn, or when there's a blockage in an artery, one of the biggest lessons that we learn is that you have to act fast. ये जो फोर्थ पेशेंट था हमारा, ये बेसलर आर्टरी ऑक्लूजन से ग्रसित था, और इसमें हमने एक ये लेसन लिया कि अगर उनको ब्लॉकेज होता है आर्टरीज या लंग्स में, तो जितना जल्दी इलाज हो जाए उतना ही अच्छा है. इसलिए तुरंत इलाज कराना बहुत ही आवश्यक है. Right. So sorry about that. Just one patient call came in. So I just wanted to handle. So the patient's doing okay. So this is really important to understand. This patient came in at around 9 a.m. He had woken up and wasn't speaking very well, and had gone to sleep the night before at around 10 p.m. ये जो पेशेंट है, ये रात को 10 बजे सोया था और सुबह 9 बजे उठा. 9 बजे उठ के जब ये आया हमारे पास, तो उसको कुछ मूवमेंट्स में दिक्कत आ रही. Right. So the first question is, should we give this patient TPA or not? And that we'll answer in another video in our courses on teaching about TPA and getting alteplase versus not getting alteplase. तो इस समस्या में हमें ये है कि क्या उस पेशेंट को हमें टीपीए देना चाहिए या नहीं, और इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे आगे कोर्सेज आएंगे, उसमें हम बताएंगे कि टीपीए पेशेंट को कब देना है और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. Right. So that's basically that. But I think the key here is that this patient sat in the emergency room and got a CT head and a CT angio head and neck. तो इस पेशेंट के साथ हमने ये किया, उसको सीटी हेड और सीटी एनजीओ, ये दोनों ट्रीटमेंट किए. Not treatment, but diagnosis. So, but it took 12 to 15 hours to read the scan. पर इस चीज में हमें 12 से 15 घंटे लग गए जानने में. So that's too late, right? It's only within. Go ahead. ये बहुत ही लेट था, क्योंकि वो जो पेशेंट था उसको कब ये चीज हुई और वो हमारे पास काफी लेट आए, इसीलिए जानने में भी हमें काफी दिक्कत हुई. No, but it's not that the patient came late. The patient came late. The patient came in the morning at 9 a.m. The scan was read 12 to 15 hours later, officially. और इस पेशेंट में इस पेशेंट की दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है. वो 9 बजे आया था सुबह, पर उसको जो रीड कर पाए वो काफी समय लगा. Right. So if you've purchased this course and you're a physician and all that, we will definitely talk to you later about this, about exactly how to read these scans, which will be in a later section about what to do, how to read these scans, and how to look for the key. There's 6 points on these scans that you want to take a look at immediately that you should know even as a general physician. अगर आप जनरल फिजिशियन हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस तरीके की समस्या में कैसे सही समय पे इलाज कर सकें, तो हम अपने आगे के कोर्सेज हैं उसमें आपको बता सकते हैं. So, but if it's really important, really important that if you're a patient, that you get the right treatment at the right time, and you obviously very respectfully encourage the team that is in the hospital to read the scans as quickly as possible. पर अगर आप पेशेंट हैं तो ये आपके लिए ये बात और भी ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि अगर आपको इस तरीके की समस्या आती है और अगर आप सही समय पर पहुंच जाते हैं
तो जो लोग आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये उनके लिए बहुत उत्साह वाली बात होती है, क्योंकि उनको फिर ये पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता बीमारी क्या है, और सीटी स्कैन वो सही समय पे कर सकते हैं। But no, now I'm saying something different. You should encourage the hospital पर अब मैं to आप read this as quickly as possible. पर अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है कि अब हॉस्पिटल्स में आप जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो कितना जल्दी इस बीमारी को पता लगा पाए। Ah, right. So they should really be encouraged because this patient sat for 12 to 15 hours after the scan inside of the hospital with the actual diagnosis was already there on the scan. So he was getting worse and worse and worse. Blood wasn't getting to the right parts of the brain and he was just sitting there. तो ये बहुत ही दुख की बात है कि एक बार पेशेंट तो सही समय पे पहुंच गया अगर, और फिर भी उसको 14 या 15 घंटे लग रहे हैं ठीक होने में या उसका स्कैन पता लगाने में, तो ये बड़ी दुख की बात है। इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, जो लोग डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, ताकि वो सही समय पर सही इलाज कर सकें। So this is not the fault of the uh, patient. This is not the fault of the hospital. This is not the fault of the doctors. This is not anybody's fault. But the problem is here is that information is growing so quickly, but people can't keep up with the information because information is growing exponentially. भाई इसमें हम ना तो पेशेंट की गलती बता रहे हैं, ना ही इसमें हॉस्पिटल की कोई गलती है, ना ही इस केस में किसी डॉक्टर की गलती है। पर बात यूं है कि अभी जो ज़माना है उस ज़माने में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं होगी तो वो कहाँ से पेशेंट को सही समय पे ठीक कर पाएंगे। So the problem is that now if, for example, if I want to go and I want to purchase a car. एग्जाम्पल जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं कोई कार खरीदना चाहता हूँ, then there are people that are out there that professionally purchase cars. They know exactly what to say, they know how to get the right price, they know how to do this, and they do this all day long. तो अगर किसी को कोई कार खरीदनी है तो वो सब इस समय पे जाएगा, उसको पता होगा कि कौन सी कार खरीदनी है, कितने पैसे देने हैं, और वो एक दिन में काम कर लेगा क्योंकि उसको सब चीज पता है। Yeah, there's somebody that actually knows how to do this. और उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसको सब पता होगा कि ये सब काम कैसे करना। You need to, in everything you do in life, you want to talk to that person that knows. तो आपको कुछ भी करना है तो आप उस पर्सन से बात करेंगे जिसको सब चीज का नॉलेज है। Exactly. So there's not, everybody has their own specialization and everybody is good at usually one or two things. Really good. तो हर इंसान के पास एक ना एक कोई खूबी होती है और वो उस एक या दो चीज में बहुत अच्छा होता है। The problem is that in the hospital, you have one doctor. In these in the Indian hospitals that we see, we have one doctor serving many patients, but their depth of knowledge is very shallow. पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो बहुत ही कम डॉक्टर होते हैं और पेशेंट काफी ज्यादा होते हैं, और उनकी जो नॉलेज होती है डॉक्टर्स की वो बहुत ही कम है। Right. And how can they get such depth of knowledge? Because they don't have time. तो वो डेप्थ ऑफ नॉलेज, वो गहराई कैसे समझेंगे, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम होता है। So it's not their fault because they're pushed up against the wall by the sheer volume of suffering. तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और उनके पास समय नहीं होता, तो वो ज्ञान कैसे ले पाए। So in this case, in these cases, you want to talk to a neurologist or a cardiologist, somebody that knows vessels and somebody that knows that, oh, okay, these things can actually happen. तो इस तरीके के केसेस में आपको न्यूरोलॉजिस्ट या फिर कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना पड़ेगा, जो जानते हैं कि वे वेसल्स कैसे काम करती हैं, उनका क्या कार्य होता है।
और वो So बेहतर that's इलाज why we've created. So that's why we've created this 24 hours, 7-day per week center where neurologists are always manning this to answer questions for any person. इसीलिए हमने ये न्यूरोलॉजिस्ट सेंटर बनाया है ताकि हम 24 घंटे 7 डेज में इनके आंसर्स देते रहें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, न्यूरोलॉजिस्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर बलूजा लाइव रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। Right. So you can just ask us a question and we will be glad to answer your question and even talk to the doctors at the hospitals. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पर कमेंट लिख सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। और आप हॉस्पिटल्स में भी पता कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी जो डॉक्टर्स हैं वो हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ताकि हम हेल्प कर सकें आप। Okay. So we'll talk about the rest of the case if for our doctors and our people that want more training in this to actually join our course. And we'll talk about giving TPA in this case, and we'll talk about thrombectomy in this case, and we'll talk about perfusion scanning in this case, which is three other concepts. तो हम बाकी के भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में जानें। Okay, great. I'm just going to stop the recording.